So digoxin is used for a small positive inotropic effect. Now what exactly is this? Positive in the sense increasing. Inotropic is force of contraction. As we talked about, ये force of contraction को बढ़ाता है. It should be used in addition to or not instead of diuretics. ये क्या करते हैं? It should be used in addition to or it should be used in addition to not instead of diuretics. अभी इसमें diuretic में भी कौन सा देना चाहिए? पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक मत दो, because hypokalemia is going to increase the toxicity. Hypokalemia is going to increase the toxicity, and because of that, if you want to give, you can give it the potassium sparing diuretic. Of course, पोटेशियम लेवल करने के बाद हम लोग कर सकते हैं. पोटेशियम लेवल अगर लो है तो स्पेयरिंग दे दो, नॉर्मल है तो कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं. ACE inhibitors is also potassium sparing one. अगर देखा जाए तो mechanism अगर देखा जाए तो, and a beta blocker also can be given. So beta blocker is going to help in reducing the oxygen demand by reducing the heart rate. तो ये सारे combination में हम लोग दे सकते हैं. Remember we talked about 3D for heart failure: digoxin, diuretic and dilators. तो digoxin दे सकते हैं, diuretic भी दे सकते हैं, and we may also give vasodilator. वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. So a small positive inotropic effect मिल सकता है if you give digoxin. Digoxin देने से पहले अपने 2D echo हमेशा करना चाहिए. 2D echo में अपने को पता चलेगा कि ejection fraction कितना है, and thereby we can objectively monitor कि digoxin का कितना help हो रहा है. Let's say पहले ejection fraction heart failure में 40% था, now it has become 45%. That means digoxin is working. Patient with digoxin sometimes feel better, but treatment does not prolong the life. उनको सिर्फ feel better होता है because उनका cardiac output बढ़ जाता है. Cardiac output बढ़ेगा तो oxygen requirement of the body can be fulfilled properly. So they may also importantly feel better. A loading dose is usually not required for a minor ailments. अगर immediate effect चाहिए तो loading dose देना पड़ेगा. अगर mild to moderate heart failure है, वैसे भी कुछ emergency नहीं है, तो loading dose may not be required. Usually 62 to 125 microgram per day or 0.125 milligram per day according to the plasma concentration. Occasionally higher dose may also be required. लेकिन higher dose lower dose करने से पहले at least 15 to 21 days का gap देना चाहिए, because it is not going to work immediately. It is not going to work immediately. तो अगर OPD लेवल पे अगर हम लोग देखें और जनरल प्रैक्टिशनर्स लेवल पे हम लोग देखें, लेट्स से, सो जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है, तुमने डायग्नोज किया है, 2D echocardiography में ejection fraction is coming less than normal. Normal is 45% to 50%, let's say, is becoming 40%, 30%, 35%. अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो गया है, कार्डियक आउटपुट कम है, एडिमा फीट वगैरह हो रहा है, तो वी कैन स्टार्ट विद डिगॉक्सिन आफ्टर रूलिंग आउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. पोटेशियम लेवल्स है, ECG है, ये सब चीजें मॉनिटर करके वी कैन स्टार्ट विद डिगॉक्सिन. और ओपीडी लेवल पे वी मे ओनली स्टार्ट विद 0.125 मिलीग्राम पर डे. Wait for 21 days. Look for improvement in the symptoms. If the improvement in symptoms are there, then you can continue it. If the improvement are less, you can increase 0.25 milligram or 250 milligram per day. और usually effect 14 to 21 days में आ जाता है. अगर पेशेंट को कुछ बेनिफिट है, अगर पेशेंट को और बेनिफिट देना रहेगा, तो we can add. That's how we can do. That's how we can do. Now, अगर ICU में अगर हम लोग देखें, let's say for example, in case of rapid infusion of digoxin can cause cardiac arrhythmia, even in